Hello students, good morning. In previous lecture, already we discussed about the what photoelectric effect. Okay, what mean photoelectric effect? So already we have discussed in previous class what mean photoelectric effect, threshold frequency, threshold energy. Understand? So different scientists given by the Max Planck given the photoelectric effect, and after that Einstein's. Okay, again he given about the what mean photoelectric effect. Okay, and about the given by the Einstein's. Okay, about the photoelectric effect. This is the equation h nu equal to h nu naught plus half mv square. Understand? H nu naught, this is the threshold frequency, nu naught. Okay, minimum frequency, and this is the maximum. Also you can write the frequency h nu. You know about half mv square kinetic energy. So already we discussed in previous class. Okay. So today we will discuss about the Dall behavior of electromagnetic radiation. What is the Dall behavior of electromagnetic radiation spectrum? You know about radiation spectrum, same already we discussed in previous class. Understand? So Dall, you know about Dall. Dall means, you know about Dall means two. Dall means क्या दो, ट्वी है ना, दो. तो डॉल बिहेवियर ऑफ क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या डॉल बिहेवियर, व्हाट इज द डॉल बिहेवियर, यू नो अबाउट ना. डॉल मीन्स दो. तो ऑल्सो यू नो दैट कि डॉल मीन्स क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रम हैव डॉल बिहेवियर. डॉल बिहेवियर मीन्स विच हैव वेव लाइक करेक्टर और पार्टिकल लाइक, है ना, विच हैव है ना एक्ट बोथ लाइक, वेव लाइक और पार्टिकल्स. ओके, वेव की नेचर भी बिहेव करता है और व्हाट पार्टिकल्स लाइक. अंडरस्टैंड रेडिएशंस. तो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट स्पीड है ना, डायलेमिया फॉर साइंटिस्ट. ओके, डायलेमा, you know what a particle है ना, nature of light posed है क्या, dilemma for scientist. On the है ना one hand, you know about ना, okay, one hand could explain the black body radiation. You know about in previous class already discussed about what I mean by black body radiation. You know about ना, already discussed. And photoelectric effects. Understand? But on the other hand, these are given to incident to phenomenon black body radiation and photoelectric effect. Understand? It was not consistent with the known wave behavior of light. What is the wave behavior of light? Could account for the phenomenon of interference and diffraction. कि how can you participate, how can you define phenomenon of interference and diffraction. Already you know interference क्या है, what do you mean interference, कि the composition of the combination of the two waves, okay, in a particular direction. Okay, तो क्या आता है interference, already we discussed about this. And diffraction you know about bending of the waves, understand, in a particular medium, a particular direction. The bending of the waves, you know, diffraction, already we discussed. Understand? So the only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave like a property. Okay, the dilemma scientist also we can say that who accept that. What is accept dilemma? कि idea that कि light possesses both है ना particle likes and wave like properties, है ना, both act particle as well as what wave like. Understand? So light has Dall behavior also we can say. Depending on the experiment, we find that light behaves either as wave or stream of a particle. Understand? So whenever radiation interacts with matter, you know about when radiation interacts, okay, contact with the which matter, matter से क्या करता है strike, तो it displays particle like property. तो कैसा बिहेव करता है ये कि when radiation strike with the matter just like any substance या metal, तो what behaves like a property like what matter, सॉरी प्रॉपर्टी लाइक क्या होगा, लाइक है ना पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टी. कौन सा पार्टिकल लाइक, नॉट वेव लाइक, पार्टिकल लाइक. अंडरस्टैंड? इन कॉन्ट्रास्ट टू द है ना वेव लाइक प्रॉपर्टीज. एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज यू नो अबाउट ना इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन. दिस इज द वेव लाइक प्रॉपर्टीज. तो विच इट एग्जिबिट्स व्हेन इट प्रोपेगेट्स. क्या होता है कि व्हेन है ना रे ऑफ लाइट या एनी रेडिएशंस प्रोपेगेट्स. तो दिस कॉन्सेप्ट वाज है ना टोटली अलाइन टू द वे द साइंटिस्ट थॉट कि अबाउट मैटर एंड रेडिएशन, है ना. इट टुक द देम अलोंग ए लॉन्ग टाइम टू बिकम कन्विंस्ड ऑफ इट्स वैलिडिटी. और ये लॉन्ग टाइम तक है ना ये साइंटिस्ट सर्च किए कि क्या है ये, है ना, वेव लाइक है, कौन सा सेटिस्फाइड ज़्यादा कर रहा है, वेव लाइक या मैटर लाइक, है ना. तो मैटर लाइक यू नो अबाउट ना कि मैटर लाइक प्रॉपर्टी कैसे है, सॉरी पार्टिकल्स लाइक, है ना, पार्टिकल्स वेव, पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टी. रेडिएशन व्हेन रेडिएशन या है ना रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर्स एंड रेडिएशन, देन क्या होगा पार्टिकल्स लाइक. ओके, और वेव लाइक यू नो अबाउट डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस. ओके, तो इन दिस वे also we consider कि microscopic है ना कि that some microscopic particles like electrons, you know about microscopic particles also exhibit this wave particle duality. Electron you know about ना which also behaves like a है ना wave like particle. Okay, exhibits wave particle है ना duality. Wave means you radiations है ना which है ना या interference which show the interference or radiations.
ओके, तो इन दिस वे ओके गिवन बाय द है ना साइंटिस्ट कि डॉल बिहेवियर है ना कि एनी रेडिएशंस या है ना मैटर विच एग्जिट्स व्हाट मीन्स क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम बिहेव्स है ना बोथ डॉल बिहेवियर मीन्स पार्टिकल लाइक या वेव लाइक करेक्टर बोथ अंडरस्टैंड जस्ट लाइक सी एग्जांपल वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन v नॉट फी मेटल से गिवन है ना वर्क फंक्शन व्हाट इज देयर वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट lithium 2.42 sodium 2.3 you know about na given there okay that means increases given there na lithium 2.42 after sodium 100 potassium lithium sodium potassium approx the है ना same but after the magnesium copper and है ना silver increases their work function understand so in this way also we can say that what कि electromagnetic radiation या है ना what spectrum act like a both Doll behavior particles like yeah as well as wave like nature understand देखिए let's see the problem here given the questions numerical question let's see okay how can you calculate how can you find let's given there what is given there कि calculate energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz you know about ना you have to calculate क्या 1 mole of photons photons you know about ना कि ray of light contains the small है ना particles तो दैट स्मॉल पार्टिकल नोन एज फोटोन्स फोटोन्स ऑफ रेडिएशन फोटोन्स फोटोन्स क्या होते हैं कि स्मॉल बंडल्स ऑफ रे ऑफ लाइट स्मॉल चार्ज बंडल्स ओके दैट इज फोटोन्स तो वी हैव टू फाइंड द है ना फोटोन्स ऑफ रेडिएशन दैट्स लाइक ए गिवन सॉल्यूशन एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन बाय एक्सप्रेस यू नो अबाउट ना एनर्जी यू नो अबाउट ना व्हाट हाउ कैन यू फाइंड द एनर्जी फोटोन इक्वल टू एच न्यू यू नो अबाउट ना दिस इज गिवन बाय द है ना एनर्जी है ना रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आइंस्टीन्स ओके तो ई कौन एनर्जी एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी यू नो तो हियर इज गिवन एच यू नो अबाउट ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 टू 10 का पावर -34 जूल सेकंड दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एच भी फ्रीक्वेंसी गिवन इन द क्वेश्चन ओके तो वी हैव टू फाइंड द ई तो ई इक्वल टू एच इनटू न्यू आफ्टर द कैलकुलेटिंग देम ओके देन वी हैव गेट व्हाट 3.313 10 का पावर -19 जूल दिस इज द व्हाट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ओके नो प्रॉब्लम या आल्सो वी है कन्वर्ट देम 1 मोल ऑफ फोटोन्स है ना तो 1 मोल फोटोन कन्वर्ट हम कैसे करेंगे दिस इज द इन केस ऑफ जूल तो इन कन्वर्टिंग कन्वर्जन ऑफ द फोटो है ना पर मोल्स 1 मोल ऑफ फोटोन्स तो इन अबाउट 1 मोल्स कंटेंट इतना मोलिक्यूल्स ठीक है 1 मोल्स ऑफ है ना मोलिक्यूल्स कंटेंट 6.0 10 का पावर 23 पर मोल यू नो अबाउट आफ्टर मल्टीप्लाइंग देन है ना दिस इज द पर मोल ऑफ फोटोन्स है ना 199.51 किलो जूल पर मोल नो प्रॉब्लम this is conversion of the है ना per molecules per moles of photon 1 moles of photon okay this is the again question given there next question a 100 watt bulb emits monochromatic light क्या कर रहा है 100 watts bulb emits क्या कर रहा है monochromatic light wavelength दिया हुआ है 400 nanometer okay तो we have to calculate what तो we have to calculate the number of photons emitted per second by the bulb कि बल्ब के द्वारा कितना है ना how many photons radiations emitted कितना वो एनर्जी है ना रिलीज कर रही है ना फोटोन्स बाय द बल्ब पर सेकेंड तो दिस व्हाट इज गिवन दैट पावर ऑफ द बल्ब 100 वाट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में सपोज दैट मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है तो ओके इन द क्वेश्चन 100 वाट दिया हुआ है गिवन दैट ओके कि पावर ऑफ द बल्ब क्या है 100 वाट्स अंडरस्टैंड दैट मीन्स कन्वर्टेड टू 100 जूल पर सेकेंड ओके वाट को क्या कर सकते हैं जूल पर सेकेंड एनर्जी ऑफ 1 फोटोन यू नो अबाउट इक्वल टू एच न्यू और न्यू इक्वल टू यू नो अबाउट ना ई इक्वल टू क्या है एच न्यू तो न्यू इक्वल टू यू नो अबाउट ना सी बाई लेमडा यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ यू नो अबाउट ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट सी अपॉन लेमडा दिस इज द फॉर्मूला ओके रिलेशन तो क्या होगा ई इक्वल टू एच न्यू देन आफ्टर क्या न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा वी हैव टू पुट देम तो क्या होगा एच इंटू सी बाई लेमडा तो यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू हेयर एच का वैल्यू यू नो अबाउट प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट यू नो अबाउट लेमडा गिवन दैट 400 nanometer means 10 ka power -9 meter understand after calculating them you know about calculation how can you calculate the power है ना 10 का power -9 this is है ना क्या conversion from denominator to numerator then क्या होता है positive occurs then we get this value understand this is the इतना energy of photons now number of photons emitted okay how many number of photons emitted understand because you know what is the power of bulb understand in per second we have to find the per second then क्या है 100 joule per second
then what is the energy given that after we divide the power by energy, understand, then we get what 2.012 10 का पावर 20 पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में कितना होगा, टू इतना एनर्जी क्या करेगी, इमिटेड, है ना, दिस एनर्जी या दिस फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इज इमिटेड, ओके, विल बी इमिटेड इन पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम, ओके. Let's see another examples, another questions. See here. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer, how many nanometer? How many nanometer? 300 nanometer. Okay. Falls on the surface of sodium. क्या करा कि when electromagnetic radiation, एक electromagnetic radiation है स्पेक्ट्रम, you know about ना, उसका वेवलेंथ क्या है, लेमडा ये दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, किस पे फॉल कर रहा है उन्हें, सोडियम सरफेस, you know about सोडियम इज मेटल, तो क्या होगा आफ्टर वी स्ट्राइक द मेटल सरफेस, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, यू नो अबाउट ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी गिवन के ई इतना जूल पर मोल, तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकालना कि मिनिमम एनर्जी क्या होगा ताकि वो एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव्ड फ्रॉम सोडियम, ताकि सोडियम से क्या हो जाए वो एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो, रिमूव हो जाए, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, अंडरस्टैंड. So what is the maximum, and we have to find what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to emitted, and also we have to find what maximum wavelength, how many maximum wavelength, okay, act, then after है ना that photoelectron emitted, वहाँ से photoelectron क्या होगा, emitting, understand. So let's see, given there what is given there what is wavelength, given there wavelength of the given there na 300 nanometer, a wavelength is given there nanometer, that means 3 into 10 power minus 9 meter. Do you know about what the relation between h n equal to what, hc upon lambda, you know about na, n equal to c by lambda, just we have to discuss na, then this is the formula, okay. Then after what, h n equal to hc upon lambda n equal to c by lambda, after putting the value h Planck's constant, c velocity of light, and this is the lambda wavelength given in the questions, after the putting and calculating them, then we get what 6.6 10 power minus 19 joule, this is the what energy, this is the energy of the energy of 1 mole, then we have to find 1 mole of energy कि how many है ना photons released in 1 moles, तो 1 mole you know about ना, carry this molecule, this number of 1 moles 6.02 10 power 23 per mole, you know about ना Avogadro number, तो this is the joule per mole कि per mole में कितना होगा, this is है ना energy released, then we have to the minimum energy, तो नहीं अबाउट ने मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, कि सोडियम से रिमूव होने मिनिमम एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, ओके, एक्ट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन्स, तो मिनिमम एनर्जी हाउ कैन यू फाइंड, तो यू नो अबाउट ना कि मिनिमम एनर्जी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम है ना क्या 3.99 10 का पावर 5 जूल, दिस इज द क्या मैक्सिमम एनर्जी, एंड दिस इज द व्हाट मिनिमम एनर्जी, वेयर इज गिवन दैट मिनिमम एनर्जी गिवन दैट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन दैट ना, electrons are emitted with a kinetic energy, okay, so this is given that 1.6 at 10 to power 5 joule, okay, कि इस सरफेस पे क्या हो रहा है वो इमिटेड हो रही है, अंडरस्टैंड. देन हाउ कैन यू फाइंड दैम, तो वी हैव टू फाइंड देम कि क्या फाइनल हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मतलब कितना मिनिमम एनर्जी होगी, तो ये गिवन दिया हुआ कि इस एनर्जी पे क्या होती है, रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होती है, इमिटेड, दिस इज द गिवन, एंड दिस इज द क्या है, सॉरी दिस इज द गिवन, एंड दिस इज द वी हैव टू फाइंड ना कि जितना जूल पर मोल एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगा कि दैट्स इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो ये इमिटेड एनर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दिस एनर्जी पे क्या होगा, इमिटेड, एंड दिस इज द मैक्सिमम जो हैव टू फाइंड किया ना एनर्जी, तो क्या हो गया, दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, ओके, देन वी गेट व्हाट 2.31 10 का पावर 5 जूल, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी कि व्हेन वी आर स्ट्राइक है ना रेडिएशन या सनलाइट रेडिएशन स्पेक्ट्रम स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस, देन ओके this is the energy minimum energy, okay, then after electron is emitted from metal surface.